क्वेश्चन टा बुझी पाले समस्ते they discuss the essential condition for exercise of the legislative power of the governor and discuss the legality of the promulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature. Namaskar, sir. Governor is an integral part of state legislature starting. Then Article 153 says that there shall be governor for each state. After that, governor is appointed by the president. Then, sir, जो conditions गुड़ा करे हबो कि conditions for exercise of the legislative power of the governor रहिबो. Governor can give his assent to bill, his withhold his assent and return the bill for the reconsideration of the state legislature, then reserve the bill for the reconsideration of the president. Then he can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. Then can summon or prorogue the or dissolve the state legislative assembly, and lays reports of the state finance commission, then state public service commission, and controller and auditor general relating to the accounts of the state before the state legislature. Then governor has the ordinance making power. Then governor can send messages to the houses of the state legislature with respect to the bill pending in the legislature. After that, governor can decide on the question of the disqualification of the members of the state legislature in consultation with election commissioner. Then most important legislative power of governor hala ki ordinance making power is the most important legislative power of governor. Governor can promulgate ordinances when the state legislature is not in session. Ordinances must be approved by the state legislature within 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw ordinance anytime. Then स्पेशली पूरा तांकर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ तांकर फंक्शन ऊपर तो कहिलो तो तार आउ गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पचारछि लीगैलिटी ऑफ रीप्रomulgation of the ordinances by the governor. तो सेठी आसीबो कि सुप्रीम कोर्ट held that the governor cannot assume legislative function by crossing the limits out in the constitution. Any excess would amount the violation of the provision. आमे एठी एग्जांपल नै परिबा डीसी वाधा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जोटी कि आपनकर जो 256 ऑर्डिनेंस कंटीन्यूअसली रीप्रomulgate हेतिला माने 14 इयर्स चाहे से एग्जांपल ता नै परिबा. देन it is contrary to the constitutional scheme and it must be held to be improper and invalid. Mostly हमें जोटा judicial review हे परिबा ordinance making power repromulgation case सेटा लिखि परिबा सर. ओके तनुजा हितन को तापर तनुजा को हितन ऑल अदरवाइज तनुजा को. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. हेलो सर. हेलो सर. हां मु तुमको एक्चुअली वेट कर लियो. ओके ठीक अछि. को हितन सर से भणजा कोइले जेमदि कि एसेंशियल कंडीशन जो लेजिस्लेटिव पावर थला ये समन करिया प्रोरोग करिया डिसॉल्व करिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ता सहित सर गोटे मिसिंग थला अपॉइंटमेंट्स ऑफ लेजिस्लेचर जेमते से जो स्टेट रे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि से जगह रे 1/6 मेंबर को से अपॉइंट देबे. तापरे सितरे सर आ जो कहितले इलेक्शन कमिशन को कंसल्ट रिकमेंडेशन रे से डिस्क्वालीफाई करिबा रे जे कोन एमएल को लेजिस्लेशन मेंबर को सेटा अंडर आर्टिकल टा बेटर मेंशन करिया था अंडर आर्टिकल 192 रे. तापरे सर आ गोटे सर से एथिला तांका जेमति कि गवर्नर कहि परिबे एडवोकेट जनरल को जे से प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस रे अटेंड करिया पई. तापरे ओके ठीक अछि. देन आई थिंक
गुडे पॉइंट ଆଉ ଗୋଟେ sir ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ sir point sir ଥିଲା ଯେମିତି କି sir ଯଦି ସ୍ପିକର ଆଉ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର absent ରହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସେସନ ରେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ କାହାକୁ ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବର କୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସେସନ ସେଟା ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ରେ ଯାଉଛି sir। ठीक अछि तनुजा sir हेलो सर गुड इवनिंग सर सर एक्चुअली क्वेश्चन टा माने दीटा डायमेंशन को नेकी क्वेश्चन आंसर टा हबो माने देखिले बाहर जाना पड़छ बहुत कॉम्प्लिकेटेड किंतु एटा बहुत इजी क्वेश्चन देखने दीटा जदी डिवाइड कर दबा क्वेश्चन सत्ते डिफिकल्ट नुहे फर्स्ट से पचार से डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर तो तापे हमें फर्स्ट लिखिबा जे एसेंशियल कंडीशन कोठी एक्सरसाइज होची बाय गवर्नर ना थ्रू ऑर्डिनेंस जरिया रे होची तो सेटा गोटे लाइन लिखिबा तापर ऑर्डिनेंस हमरो सब पॉइंट गोटे करबा जे ऑर्डिनेंस टा को क्षेत्र रे गवर्नर द्वारा माने अप्लाई करा होची जेमति कि माने जेतेबेले लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट इन सेशन थजी किबा यूनिकैमनल लेजिस्लेचर ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जदी सेशन न रहूची दीटा केसेस रे ऑर्डिनेंस होची आ को आर्टिकल अंडर रे ऑर्डिनेंस होची सेटा गोटे लिखिबा आ ऑर्डिनेंस रो टाइम पीरियड केते ना 6 वीक्स रहूची नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायमेंशन अछि जे रीप्रॉमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस कोठी हुए ना फर्स्ट होची जदी से ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक्स भितरे एक्ट आकारे परिणत न होई पाला तो आउथरे सेटा नोटिफाई कि पुनी आउथरे सेटा एक्ट हबा पई ऑर्डिनेंस आउथरे जारी कराबो तो रीप्रॉमulgation ऑर्डिनेंस बा हमें गोटे एग्जांपल दबा जेमति कि से डीसी आधा केस हो किबा एनसीआर रे जो हमरो ये थिला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पई गोटे कमिटी बसा हैतला विदाउट रेटिफाइंग इन पार्लियामेंट से एग्जांपल भी हमें दे परिया तो एजरा माने आदर इंपैक्ट कोन पडुची केते दूर एटा लीगल रिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनेंस होउची सत किंतु एक्चुअली एठी कोन होची ना जने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रे इंटरवेन करूची तो सेटा कोन होची ना यूसरपेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द एग्जीक्यूटिव एठी होची जोटा कि हमरो सेपरेशन ऑफ पावर को वायोलेट करूची तो एटा केबे भी लीगल हेबो नै अकॉर्डिंग टू हमरो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे एटा सेपरेशन ऑफ पावर होची हमरो मेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो एटा को केबे हले वायोलेट करिवा कथा नहे किंतु रीप्रॉमulgation ऑर्डिनेंस रे एगुडा को होउची तो दिस इज इलीगल तो हमें गोटे निजे ओपिनियन दे परिवा कि ऑर्डिनेंस इज इटसेल्फ ए बैड एंड रीप्रॉमulgation होची आउरी ताठो भी खराब माने रीप्रॉमulgation ऑर्डिनेंस इज वर्स देन ऑर्डिनेंस बोले एमती गोटे ओपिनियन लास्ट को हमें लिखि परिवा ओके वेरी गुड तनुजा आई थिंक यू हैव माने जोडा कहलो वेरी एक्सीलेंट पॉइंट एक्चुअली ओके जोडा कि डिमांड करछ क्वेश्चन यू टेल इन द राइट लाइन ओके आसे जति को सर लीगैलिटी ऑफ रीप्रॉमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस रे आमे ताको जस्टिफाई करि परबा टू वे रे गोटे ला कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रो गोटे सुप्रीम कोर्ट थ्रू रो तो कॉन्स्टिट्यूशन केस रे हमें लिखि परबा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट अबाउट वेदर रीप्रॉमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस इज पॉसिबल और नॉट but in Supreme Court case in DC Wadhwa case held that repromulgation of ordinance can be legally validated in two grounds. First, if the session of legislature is too short that it is unable to discuss on that ordinance, and in second case, when the state legislature is overburdened, that ordinance could not be placed before it within 6 weeks. So in those two cases, we can validate the legality of repromulgation of ordinance. But in same case, Supreme Court also held that if the ordinances has malified intention or bypasses legislature, then it can be held unconstitutional. So both legality and illegality and illegality can be determined in this way. Thank you, sir. ओके वेरी गुड तमे आ गोटे एंगल आनलो जे हमरो जो ऑर्डिनेंस टा इश्यू हेची जदी विधानसभा पाखे स्टेट लेजिस्लेचर पाखे जदी टाइम नाही लॉ आनिया को ओवरबर्डन अछि तो सेही केस रे जदी आसीची Again, sir. सेटा मे भी चेक करा जिवो तार वैलिडिटी आ जदी इंटेंशनल गोटे मालाफाइड इंटेंशन आसीच की जेमति कि हमें कहले रिफॉर्मुलेशन हमरो डीसी वाधा केस 1987 रे 250 टाइम्स हमरो ओना जायछि
तो इटा रियली जदि मालाफाइड इंटेंशन इट इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर कहजे पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी जो अछि कि लॉ मेकिंग प्रोसेस गोटे हमर लेजिस्लेचर जिबा आ तमे गोटे पैरेलल लॉ मेकिंग करिवनी by undermining the parliamentary supremacy, then it is violation of the basic structure of the Indian constitution. तो से कोन ना गोटे हमर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हे जिवो ओके तो यस तो एटा हमर कोन ना रहया दरकार जे फर्स्ट पार्ट रे तमे लिखिलो जे जेमति यस जे गवर्नर रो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रहू छी जेमति कि हमर जेहेतु से गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो integral part of the law making process in the state legislature रे रहउछंती तो to give assent to the bill हो कि rescind जो suspend हो कि reserve हो कि withhold हो तो सेही केस रे हमर कोन ना तो रहउछंती किंतु हमर जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन पचाय जे पर्टिकुलर तांको ऑर्डिनेंस को नै कि जदि जो ऑर्डिनेंस इश्यू करूछंती कि promulgation of the ordinance होची तो सेही केस रे एटा केते जुक्ति युक्त ता ऊपर हमें कहबा ओके ठीक अछि तो सनत एनी अदर पॉइंट ओके सो ठीक अछि तो एथिरा हमें कोन पॉइंट ताले कहिले आगो जे मु तुमको जस्ट सम अप करूची जे हमर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हां को जनो ओके तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हमें डिस्कशन करूथले जे के लॉ मेकिंग प्रोसेस हमें जो डिस्कशन करूथले कि जे प्रेसिडेंट करो जे ही Sir. हां को Sir, I just want to highlight, sir, governor cannot make an ordinance without the instructions of president, sir, in these three cases, sir. Can we give here, sir? सॉरी Sir, the governor has no power. He cannot, sir, make an ordinance without the instruction of president, sir. Those three cases that the case which has already been containing the provision that previous sanction to the president. He cannot make the ordinance about that bill also, sir. And another point, sir, that if anything is necessary for implementation of the bill, then before prior approval of the president, he cannot, sir, make it or make an ordinance about that. ओके सो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द जो हमें कहले जो गवर्नर करो जो आर्टिकल 213 रे दिया है तो को केस रे हमर ऑर्डिनेंस ता दिया हुए ना जनरल तमर तो जानि जे हां जतले पार्लियामेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर जतले सेशन में नाही किंतु तो ये ऑर्डिनेंस पछरे कहार हाथ थाए एक्चुअली ऑर्डिनेंस ता गवर्नर निजे आनंती ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस रे करो Sir, state legislature. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस रे करिवे डेफिनेटली ओके तो सेही दिबे हमें कहूचे जे तो जतले ऑर्डिनेंस आना जाए यदि रियली हमारा पार्लियामेंटरी प्रोसेस को बाईपास करी के आना जाउची देन इट इज वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहल जाउची तो एमिति हमारा बिहार रे ऑलमोस्ट हमें कहूचे जे जो डीसी वाधा केस हम 1987 कथा कहले जे 240 टाइम 256 टाइम्स हमरा एटा करा जाउची ओके तो सेति पई ए केस रे हम जतले जे गोटे ऑर्डिनेंस आनले पुणी सेटा करंदी 6 वीक भीतर जेबे बसुची सेटा पास न होची तार जोटा मैक्सिमम लाइफ को जे 6 मंथ 6 वीक ता भीतर न आसले इट इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउची बाय आज इट इज बाईपास द लॉ मेकिंग प्रोसेस तो सेति पई हमर तार जो डिफरेंट एंगल रो हमें देखले सो दी तीन जनकर आंसर जस्ट हमें देखिबा तो डिफरेंट पॉइंट रो तो एथिरे हमर कोन होची ना द गवर्नर जो हमर जो एकर जो स्पेसिफिक कंडीशन होची जे को एसरे हमर से लॉ करि परिबे जे ऑर्डिनेंस इश्यू करिबे जे लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन और इन रन तापरे गवर्नमेंट इज governor is satisfied the essential circumstances exist
to address the matter of urgent public importance. So important impact kon now undermine the parliamentary supremacy, challenge the basic structure, and undermine the majority and government of government with continuous policy, contentious policy, parallel law making ho encouragement at authority and government को encourage करूची तो एटा तार लेखिलो जे legality of the re-promulgation हमें देखिले no such clear cut mention the constitution में किसी clear cut mention है नहीं related to re-promulgation को नहीं कि as per the opinion of the Supreme Court re-promulgation of हमारा ordinance is unlawful fraud as a part of the parliamentary supremacy against it. तापरे तमे केस देलो जे को केस है so it is an act of running parallel law making institution so subject to judicial review, satisfaction of the government and the extension of the ordinance. तो एथिरा हमर डीसी वादा केस और के वर्सेस हमर बिहार केस रे the re-promulgation ordinance under हमर exceptional case रे आनिबो हाउस तो जेतोला हमर वेरी हमारा रिसेस रा अछि कि वेरी लिटिल टाइम ड्यू टू ओवरलोड तो सेही केस तमे आनी परिबो किंतु इंटेंशनली जदी आनु छ तो हाउस इज ओवरलोडेड विथ द वर्क टू डिस्कस एंड डिबेट तो सेही केस रे आनी परिबो अदरवाइज तमे जो रिफॉर्मेशन आनु छ तो एटा होछि serious fraud in the Indian constitution. So if ordinance is failed to be present before the legislature seही केस रे आनी परिबो the act along with the ordinance comes to an end after the sunset period बोले हमें कहचे तो एटा तमे लेखि परिबो जे को केस रे हमर ऑर्डिनेंस ता एंड रिप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ता करि परिबो ओके आउ के जनकर आंसर देखिए हेलो सर से जो रिप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस सर अछि सेटा को दीटा कहले सेटा देखा गलानी ठीक से गोटे तो एक्ट न हेले विदिन 6 माने आफ्टर असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल असेंबली हला परे से केस रे कहले जे जदी ओवरलोड अछि जदी हमरा बर्तन ताका बगैर बहुत काम अछि अलग इंपोर्टेंट काम करछन्ती से ऑर्डिनेंस पास करिया पे टाइम नै सपोज हमरा 6 वीक भीतर अछि ना तो 6 वीक भीतर ताका काम हेई पल्लानी अलग जो ये ओवरलोड जगु एटा को पास करि पल्लेनी सपोज ओके हमें रखिथिले किंतु एटा कोन हला ना सेटा को से बिल्कुल डिस्कशन डिबेट हेलानी ताका टाइम हेलानी तो सेही केस रे तमे आनी परिबा आउथरे ऑर्डिनेंस ठीक अछि तो एथिरे तो कोन तमे लिखि परिबो जस्ट मु ओके जे तमे आगे फास्ट एसेंशियल कंडीशन होची लास्ट एथिरे हमरा कोन आगे लिखिबो जे हां एटा होची इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन मेकिंग प्रोसेस तापरे कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू द लॉ मेकिंग फंक्शन तापरे तीनटा कंडीशन जे गिव एसेट टू द ताको लेजिस्लेटिव पावर गुडा को लिखा है जी तो not to be used as a discretionary power, give assent only to the state bill or the concurrent bill, ensure the legislative action in accordance with the constitution. तापरे ताका legislative power is summon or prorogue of state legislative, give assent, withhold or return the reserve the bill for the president, nominate 1/6 of the member and can promulgate ordinance हमें कहले. Okay, next होची legality हमें देखिबा Constitution of India is silent about whether the re-promulgation of ordinance is possible or not. 2017 case Supreme Court re-promulgation of ordinance is a fraud constitution, diminishes the law-making process of the parliament. तबे issue आधा case रे तमे देखिला जे said that re-promulgation of ordinance can be justified in two grounds. जदी हमरा जो legislature period टाइम too short रहउछि कि मा सेमन overburden होउछि से केस जदी आनुछ सेटा justified. Also in case of in that case Supreme Court showed that if the ordinance is in malafide intention really जदी genuine case ताल ठीक अछि हां से टाइम हेलानी पास हे पेलन तो आनी परिबो किंतु जदी रियली तमरो गोटे थर तमे जानि पास हे पेन तमे टाइम को किनिया पई बाय करिया पई
गोटे पर गोटे खाली तापर आनी की ताको गड़े चलीछ 6 months then definitely malafide intention हेले okay by bypassing the legislature then it can be declared unconstitutional तो एटा को null and void करते हैं okay so ordinance making power of the governor should be used as a supportive tool not as a replacement tool हिसाब रे हमरे यूज करिया okay तो ये लिखा है recently Tamil Nadu CM has said the governor so charged the governor failed to perform his duty vested by the constitution when he has to deciding on a bill to adopt the legislative act against the need तापरे यार काम sent to the governor for his action legislative power summon and prorogue the both also the address the first session the ordinance making power from 213 to make the laws when both house of the state legislature are not in session okay so may in many states used as a tool to bypass the legislative process okay whenever the bill is get to deleted okay so Varda case to me the frequent repromulgation of ordinance again the brought up in Supreme Court through a read petition okay ओके ठीक अछि नहीं ओके ठीक अछि हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिया आइ थे अगर किसी डाउट अछि हेलो सर हां को सर मु को भाउदली रिप्रोमुलगेशन रो दी चारटा रिसेंट एग्जांपल सेदा देले बोला ही परंदा कौन in this sir land acquisition act December 24 हेतला 2014 ने हेतला एटा पुनी रिप्रोमुलगेट दुइथर हेतला अप्रैल रे और मई रे 2015 रे और सर एबे 18 रे 2018 रे इश्यू हेतला इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस टा एटा रीइश्यू हेला जनवरी 2019 रे तापरे सर केरला रे जिंदे सर अपन कहले बिहार रे 256 केरला रे 2020 सुधा एग्जांपल थोड़ा दबो गवर्नर रिलेटेड हेतिबो एटा क्वेश्चन पचासी गवर्नर इंडियन काउंसिल मेरी हमरो सेंटर पे हेतिबो तो देखिबो तो जोटा रिलेटेड टू स्टेट रिलेटेड टॉपिक हेतिबो ताको रिलेटेड जोते गवर्नर कर कम्युनिकेशन हेछि से उडा को मोर फोकस करबो ओके अच्छा सर एथरे जो लीगलिटी तो रहला पोरे माने इन द इमरजेंसी सिचुएशन रे हम रिप्रोमुलगेशन करि परिबा एवं ता पोरे भी तार जो ता नेगेटिव पॉइंट से लिखिया पड़े जेंपे कि सर कहले जे abuse of constitutional process by ignoring Supreme Court decisions जेंते सर Supreme Court decision जे थिला जेंते डीसी वादा केस रे ताकू भी ताको जजमेंट को एटा इग्नोर करी कि रिप्रोमुलगेशन होउची जेंते कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अंडरमाइंड केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट एस्टैब्लिश करले सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु सेटा को इम्पैक्ट कोन पड़छे हम कहले जे हम तार इम्पैक्ट लिखले जे एआई जगु हमरो इम्पैक्ट होची पैरेलल मैं लॉ मेकिंग करछन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन होची तापरे हमें एथिरे कोन अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट आड को जीवो ओके तो अंडरमाइन द पार्लियामेंट सुबिधा तार एटा तार कॉज लिखले जे जदी हमरो कोन जो रिप्रोमुलगेशन होची ओके so going to the next question 7 number question में जीवा they discuss the role of national commission for backward class okay in the wake of its transformation from a statutory body to constitutional हबो नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास रा कोन रोल कोन आउ हमरो स्टैट्यूटरी बॉडी पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
तनुजा को तापरे श्वेताली Sir, National Commission for Backward Classes, NCBC was earlier a statutory body. आगु statutory body थिला under ଗୋଟେ act थिला, that is National Commission for Backward Classes Act 1993. तापरे वर्तमान 102 Constitutional Amendment Act रे under Article 338B इटा गोटे constitutional status को हे जायछि. तो सेटा हमें first लेखिबा जे केमती ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन एनसीबीसी हैला. तापरे पचारछि डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. तापरे रोल लेखि कि हमें लिखि परबा कि जेमति कि हमरो रेस्पोंसिबल फॉर प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस. तापरे प्रोवाइड जस्टिस टू दीस सेक्शंस, देन ब्रिंग सोशल इक्वालिटी, then participate and advise on socio-economic development, socially backward classes लिख परिबा, then evaluate the progress of their development. एमती करके 3-4 पॉइंट लिख परिबा. आउ जदी हबो इंट्रोडक्शन रे हमें नेशनल एनसीबीसी रो हेडक्वार्टर आउ सती की आउ कंक्लूजन रे हमें लिख परिबे कि जे एटा गोटे माने भलो माने बेटर हे जे परची जेमदी कि आगुरु स्टैट्यूटरी बॉडी थिला तो किछि लिमिटेशन रहउतला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बादरु वेरी इफेक्टिव हेची बोली कंक्लूजन रे लिखिबा. ओके ऑलिवर Sir, the National Commission for Backward Classes is an outcome of the Indira Shani case, that is Mandal Commission of 1992. It got its statutory body status because under the National Commission for Backward Classes Act 1993, and under the 100 and on 14th August 1993, it got its constitutional body under the Ministry of Social Justice and Empowerment, and currently it is headquartered in Delhi. Sir, if we go for the structure of NCBC, there is a chairperson and 4 members, and currently the chairperson is Mr. Bhagwan Lal Sahani. And sir, the constitutional provision, so the 102nd constitutional amendment inserted new articles 338B and 342A. Sir, NCBC power and functions are to investigate and monitor all the matters of the SCBC, that is socially and educationally backward class, under any law, then to participate and advise actively on the socio-economic development. And sir, it annually presents the report based on the working of safeguard to the president. And NCBC is responsible for protection, welfare, development, and advancement of the SCBC classes. And in the wake of its transformation from a statutory body to constitutional body, sir, it provides justice to the SCBC society. It addresses the concern of backward class and brings social equality. And it helps the backward class people fight atrocities against them and delivers quick justice, because justice delayed is justice denied. Then including a woman member from the backward class in the proposed commission is a welcome move that develops gender parity. Then sir, it would also not encroach upon the right of state government, as they would have their own backward class commission. And it brings the NCBC par with the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Sir, in way forward, we can say that there is a need for proper representation of backward class of the deprived section to join the national mainstream. And NCBC is an important constitutional body of India that investigate the condition and difficulty of the socially and educationally backward class. Okay, very good, Oliver. Shwetali, any other point? सर ऑलमोस्ट सब पॉइंट गुडा कवर ही हेची आउ गोटे पॉइंट रह गला ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे तो आर्टिकल 324A introduces greater transparency as it's made mandatory to the concurrence of the parliament for adding or deleting any community in the backward list. Our issues like features of expert body are not provided in CBC. Then backwardness is not defined properly. It cannot address the current challenges of the demand of the various caste of the included backward classes. तापरे एटा भी लिखि परबा सर माने लास्ट कंक्लूजन रे जो 105th constitutional amendment act 2021 restored the power of the state government to recognize SCBC.
Okay, very good. Okay. Okay. गुरु कौन आ रहा गुरु? सर नमस्कार सर। कुआ गुरु? हेलो। गुरु कुआ? सर टिके नहीं रही नहीं मु भाबुची क्वेश्चन टिके अलगा पचारथिला हमको मु भाबुची कि क्वेश्चन टा सर पचारिची कि 1993 रे स्टैट्यूटरी बॉडी हेइथिला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नेकरी आउ तापरे गोटे एक्ट पास हेकरी तापरे एबन 2018 रे सेटा सर कहूची से कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पाइला तो से क्वेश्चन रे कहूची कि इन द वेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तार रोल टा कोन चेंज हला दैट मींस जेतला स्टैट्यूटरी बॉडी थिला सेटा कंप्लीटली तार पावर टा थिला गवर्नमेंट पाखरे वर्तमान ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट वर्तमान completely appropriate authority towards amending the list of backward classes on the parliament हे गला एटा फर्स्ट रूल हैला तापरे मु भाबुची कि सेकंड रूल टा या हेबो कि वर्तमान आउ no discretion of the government to include any class into the list of the backward classes as per with the NCSC NCST से भलिया बेसी प्रोविजन हमें पाइले डेवलपमेंट टू एससीबीसी और ग्रेवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म टू बैकवर्ड क्लासेस टा भी इंप्रूव हबो कारण वर्तमान पार्लियामेंट पाखर रहला सेटा आउ ऑटोनॉमी टा वर्तमान पार्लियामेंट पाखर रहउची ऑन डीलिंग विथ द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनसीबीसी। ओके यस तो तुम जेमती कहला हमर गुरु ओके तो किछि डिफरेंट एक्चुअली एथिरे ने तार जो हमें कहले जे सिग्निफिकेंस आगो आगो हमर जो नेशनल काउंसिल फॉर जो बैकवर्ड क्लास थिला गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि 1993 रे आस्थिला तापर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 रे गोटे पर्टिकुलर आर्टिकल भी दिया गला 338 बी तो एइथिरे जेतेला हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाउछि तार मीनिंग हे जाउछि जे ओके तो डेफिनेटली हमर कोन होछि ना तो तार प्रोविजन जो रहइबो पार्लियामेंट ता पे लॉ करबा दरकार पर्टिकुलरली सी सेक्शन जो नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास तो बैकवर्ड क्लास मानो पे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन रखा जिवो तांको केमिति प्रोटेक्ट द बैकवर्ड क्लास रहइबो कि हमर जदी जदी तांको अगेंस्ट रे कोनोसी एट्रोसिटीज होछि किमा तांकर कोन डेवलपमेंट हेछि ना नै वेलफेयर स्कीम तांको जो फॉर किछि आसीछि ना नै तो ए सब गुडा को माने एग्जामिन करबो हमर एनसीबीसी तो जेतेबेला हमर आगुरु कोन जेतेबेला हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जाकर गोटे हमर स्टैट्यूटरी बॉडी थिला ओके लॉ तो हमर आसला किंतु सेटा मैंडेटरी नथिला तो गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला माने एटा मैंडेटरी गठन करिया पड़िबा आ रिसेंटली हमर एथिरे जणे वुमेन आ दुई जण स्पेशलिस्ट जेंति हमें कहूचे तो निहाती गोटे एनसीबीसी कमिशन रहिबो आ पर्टिकुलरली तांकर काम जो गुडा काम रहिला तो सेडा को से माने वेरीफाई करिके परिबे तो सेथि भाई हमर कहूचे जे तार जो ट्रांसफॉर्मर जे जेता हमर ट्रांसफॉर्मेशन हुए गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी रु जेमति हम कहबा जे हमर सीवीसी भी गोटे थिला तो हमर कॉन्स्टिट्यूशनल सपोज हमें कहला गोटे स्टैट्यू माने नॉन स्टैट्यूटरी गोटे स्टैट्यूटरी करा हला किबा हमें जेमति कहबा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आगुरु कोन ना आज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नथला किंतु हमर डीपीएसपी रे हमर ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत हेतिला किंतु जेतले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिवो गोटे मैंडेटरी एटा करा जिवो जे तमे निहाती ता पई ए इंस्टीट्यूशन गठन करिवो तो एटा हमर मैंडेटरी हमर हे जिवो आ डेफिनेटली जेहेतु हमें वेलफेयर ऑफ द गोटे हमर बैकवर्ड क्लास कहूचे तो सेमानकर जो प्रोटेक्शन हो किबा सेमानकर वेलफेयर डेवलपमेंट ए सब पई निहाती कमिशन रहला दरकार सेटा तमे एथरे मेंशन कर सर से जो ट्रांसफॉर्मेशन रे सर जो कहले गुरु प्रसाद साहब सेटा आउटे रिपीट करिया कोन सर सेटा बुझी होनी ए जो ट्रांसफॉर्मेशन हला पार्लियामेंट रो कॉन्स्टिट्यूशनल से कोन केते गुडा पॉइंट कहले सेटा माने धरी पाले नै गोटे मिनिट हमें जस्ट डिस्कशन करतो ओके गोटे मिनिट सो लेट मी शेयर द स्क्रीन तो को पॉइंट उडा त इथिरो
सर इन जनरल तो हमें जहाँ आगुरु थिला सेगुडा सब लेखिबा किंतु एक्स्ट्रा होची जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला पर किछि एक्स्ट्रा कोन आ एक्स्ट्रा हला से लेखिया पड़िबो ना। देखो ओके तो गुरु जोटा हमर लिखिचंदी एटा ओके तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज इनिशियली हमर कॉन्स्टिट्यूटेड हेतला बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट by our National Commission for Backward Class Act गोटे 1993 गोटे parliamentary act रना है तो एटा गोटे statutory status थिला but this act was repealed through our National Commission for Backward Class 2018 जो 100 second amendment act रे आसिला तो ये present our commission has been हमरो accord the constitutional status हम दिया है 100 second amendment act 2018 ओके तो ये constitutional status जो दिया जाय छी तो इथिपाई हमर पर्टिकुलर आर्टिकल हम 338B into the constitution framing a commission for a social and economically backward class कथा तो हमर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीबीसी टू हमर तो स्टैट्यूटरी माने गोटे स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला सो फॉर मोर हमर यूज फॉर मोर हमर यूजफुलनेस हला कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लास तो ता पई तापरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट एंड डेफिनेटली गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हले एटा ता पई इंप्लीमेंट करबा होची गोटे मैंडेटरी हे जाबो सो नाउ द पार्लियामेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू अमेंड द लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास आगु हमरो माने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रे होतला जेमि कि हमरो वर्तमान टोटल को गुडा हमरो बैकवर्ड क्लास रे ऐड हबना नहीं सेटा पार्लियामेंट डिसाइड करबो नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्लूड द क्लास इनटू the list at par with the हमरो नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी तो डेफिनेटली हमरो कोन ना एथिरे गवर्नमेंट रो डिस्क्रिप्शन किछि रहिबन नहले वोट बैंक पॉलिटिक्स इस विषय में जानि कि गोटे गोटे इंक्लूड करितबे तो एबे नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्लूड ए क्लास इन द लिस्ट ऑफ par with हमरो नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी तापरे नाउ ऑटोनॉमी ऑफ द पार्लियामेंट इज in various matter and also in dealing with the complaint more provision for development of SCBC तापर हमरो ग्रीवेंस redressal of the backward class will be improved okay criticism रे against the federal structure so less role of the state as it remove the power of the inclusion and exclusion एटा गुरु ए पॉइंट लिखिबनी कारण 105 amendment act रे एबे हमरो स्टेट को दिया जाय छी पावर कि से माने डिसाइड करिवे को माने कास्ट टा हमरो कोनो ना बैकवर्ड क्लास रे ऐड होबना नै so this bill was silent on the aspect of binding the effect of the governor's recommendation on the president. This bill does not discuss the specific method tapre misuse of power giving such autonomy to NCBC provide the scope for misuse of power example la vote bank politics okay so eithre in fine although giving the constitutional status to NCBC is a way forward step in the welfare of the NCBC it has to lead the source of the power by the center to classify backward class सर ट्रांसफॉर्मेशन रे हमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लिखबा तो ट्रांसफॉर्मेशन रे मो मतरे पॉजिटिव टा लिखबा बहुत पॉजिटिव रे हमरा कोन होची ओके क्रिटिसाइजिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रे पॉजिटिव तो लिखबो तो गोटे दिटा जो चैलेंजेस रहउची जे आमे तो नेई गले इथिरे किंतु जे हमर मोर स्टेटस तेतले हमर दे देले काकू ना आइडेंटिफाई करिबारे जो इंक्लूजन की एक्सक्लूजन पर हम आइडेंटिफाई द क्लास इनटू बैकवर्ड क्लास तो इथिरा हमर जेतले कोन ना मोर हमर आकु दिया गला काकू तो पार्लियामेंट को दिया जिवो तो डेफिनेटली एटा हमर कोन ना फेडरल स्ट्रक्चर किंतु एटा एबे तमे कहि परिबो जे नहीं स्टेट को भी हमर 105 अमेंडमेंट एक्ट रे दिया जाउची ओके तो मोर पॉजिटिव रे लिखो जो इथिरे तो बेटर रहे सर से फेडरल जिनसोटा तले लेखा हबोनी ना जो भारत को फाइनल काहे कि ना मो मतरे एबे तो हमर 105 अमेंडमेंट एक्ट स्टेट को दिया गला ना तो सेति पई
से पॉइंट हमरा वैलिड न है सर था तीनटा पॉजिटिव हम लिखवा जे मोर इंक्लूसिव डिसिसिव अथॉरिटीज पार्लियामेंट देन आ गोटे होची बेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आ आर एनसीडीसी रो रोल तमे जेमति कि हमरा ए जो कहउले पिला माने तो सेटा जे हमरा कोन करूची से पचाची रोल ऑफ ना तो डेफिनेटली रोल तो हमरा होची कोन ना हमरा चेक द एट्रोसिटीज हमरा वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोटेक्ट द बैकवर्ड क्लास आउ एबे वुमेन एम्पावरमेंट पई वन वुमेन को ऐड करे देची ओके दीज आर स्पेशलिस्ट को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम आउ प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करिया पई तो हमरा मोर इनक्लूसिव होची जेमती जो पॉइंट आ कहला जे मो वुमेन माने को ऐड करा मोर इनक्लूसिव पॉइंट को डिफाइन करिया पई तमे वन वुमेन आउ टू स्पेशलिस्ट हमरा ऐड कराई सुदी कहया मोर ट्रांसपेरेंट करिया पई हमरा कोन ना आकू जो मोर इफेक्टिव करिया पई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमको दिया जाय करी करिया ओके ठीक अछि coming back to the question number 8 the question number 8 होची President of India is a fountain of mercy and justice. Explain. No. President is a fountain of mercy and justice. सर एठी हमें जो प्रेसिडेंट को जो पैर्डनिंग पावर उडा सब लिखिबा वन बाय वन तो ताकू ईच एंड एवरी जहा जो पैर्डन कम्यूट रेमिशन रिप्राइव रेस्पाइट सब उडा को लिखि की ता बारे में टिके टिके लिखि की लास्ट को लिखिबा जे एंती की आ गोटे जो केस ता एक्सेप्शनल केस जो कोर्ट मार्शल केस ता सेटा जेमति की रहउची सेटा भी रहउची प्रेसिडेंट को अंडर रे कोर्ट मार्शल केस ता भी गोटे अंडर ले ता भीतर रखिया ताते प्रोसीजर ता केमिति होउची मर्सी पिटिशन फर्स्ट कन्विक्ट रो जाउची फाइल की 7 days आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट पाखु जाईची तापरे प्रेसिडेंट एडवाइस नोचंदी कैबिनेट करो तापरे नेला परे सेटा जाउची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए पाखु जाईकी वेरीफाई होची देन फाइनली मर्सी पिटिशन ता ये होची सेटा गोटे लिखिबा किंतु इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू ड्यूरिंग ग्रांट ऑफ मर्सी पिटिशन एति की लिखिबा तो किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल दबा माने को केस रे हमरा मर्सी पिटिशन की सर ए जो निर्भया केस गोटे थिला बे जो तार जो कन्विक्ट थिले 6 जन को तांको ये करिया पे कहैतला जो से केस रो दे परिया निर्भया केस रो जो अक्यूज माने थिले ओके आउ कोन रहला की कहबो श्वेताली सर हमें स्टार्टिंग करबा कि पार्डनिंग पावर एटा मेनली प्रेसिडेंट को बुझे तो एटा मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 72 अंडर आसे तो तीनटा केस रे हमें पार्डनिंग पावर था प्रेसिडेंट को गोटे हला पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ आ गोटे हला बाय ए कोर्ट मार्शल और मिलिटरी कोर्ट पई आ गोटे हला सेंटेंस इज ए सेंटेंस माने डेथ केस रे जाय तो तापर हमें ऑब्जेक्टिव रे दीटा वे रे ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करबा ऑब्जेक्टिव रे टू कीप द डोर ओपन फॉर द करेक्टिंग एनी जुडिशियल error in the operation of the law then second asibo to afford relief from a sentence which the president regards as unduly harsh तो तापर हमें लिखिबा जो पांचटा रहिची पार्डन कम्यूटेशन रेमिशन एंड रेस्पाइट रिप्राइव और लास्ट रे कंक्लूजन रे एटा लिखि परबे कि सुप्रीम कोर्ट इन केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 केस थ्रू reiterated its stand and held that the grant of pardon by the president is an act of grace and therefore cannot be claimed as a matter of right. Okay. आगे से कहबो कि
सर हमें एथरे चैलेंजेस लिखि परिया कि मर्सी पिटिशन रो को हेलो सर हाँ को सर एथरे चैलेंजेस लिखि परिया कि मर्सी पिटिशन रो चैलेंजेस रो जेमति माने सर जेमति सर जे नो टाइम लिमिट गिवन इन द constitution for a decision of a mercy plea this is the violation of a human rights to the time limit जदि नथिबो ओके तो जदि तुम पाखे सफिशिएंट पॉइंट नाही ताले लिखि परिबे तो इथिरे जनरली तांकर जो लिखाई छी जे हमरा कोन जो हमरा जो क्वेश्चन लिखाई छी जे पॉजिटिव रे हमरा लिखिबा चैलेंजेस रे माने पॉइंट नाही जदि लिखो किछि हिंदी नाही भूल तो किछि लिखो चैलेंजेस अच्छी सर पॉइंट अच्छी जेम एक्ट सर इंफॉर्मेशन सर अनुसार यदि क्रिटिकली एनालाइज 70 टा मर्सी पिटिशन भितरु टोटल सर 8 टा वर्तमान सुधा सर एक्सेप्टेड हेई छी 69 टा रिजेक्ट हे जाई छी फ्रॉम 1991 टू 2010 भितर एटा सर ओके सर यदि the क्रिटिकली president एनालाइज not ଦେଇଥିବ bound to ତାହେଲେ state the ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ reason ଅଛି for the rejection of mercy petition. So the president bound not bound to the state to reason for the rejection of a mercy petition. It results lack of a transparency in this process. The judiciary interventions रहुची mercy petition रे सेदरा example सा थिला रंगाभिला केस रे आ गोटे सर कहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तबे धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बेंगल ओके सर यदि से क्रिटिकली एनालाइज पचारिथिବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲେଖିବା ନା ପଜିଟିଭ ଲେଖିବା ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଲେଖି ତାପରେ ଓପିନିଅନ ଲେଖା ହବ ନହେଲେ କାହିଁକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେଟା କିଛି ନେସେସିଟି ନାହିଁ ଲେଖିବା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଅନେସେରି ମାନେ ବଢିବ ଲେନ୍ଦି ହବ ଏଟା ଆନ୍ସର सेथमे माने तम पाखे जदि पॉइंट अछि जदि तमे एक्सेप्ट जदि तम पाखे सफिशिएंट पॉइंट अछि जदि केस दि तीनटा देला ताहे लेखनी किंतु तम पाखे जदि किछि पॉइंट नाही चैलेंजेस तम टिके तुमको मेकओवर करिया को चाहू आंसर को ताहे लिखि परबो ओके मुख्य जदि किछि पॉइंट नाही परीक्षा रे मने पड़नी तेनु सेही केस रे तमे यूज करि परबो ओके तो नेक्स्ट सर एटी पांचटा जाको पार्डनिंग पावर लेखिना सबुट गोटे एग्जांपल देले तो ही जाउजी से कथा हम कहछि जे तमे लेखिला जे पार्निंग पावर केस रे कोन गोटे केस रहला कि रिप्राइव केस रे कोन हेतला तो से बडा केस तमे दे परिबो कि हमरा कोन ता एथे मेन होछि जे कोन ना हमरा जो आर्टिकल 32 रे तांका पार्निंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऊपर हम लिखिबा फॉर एग्जांपल दे के लिखिबा आउ एक्सप्लेन करि तमे पॉइंट नथिबो भी तमे गोटे डेटा चैलेंज लिखिबो किछि खराब नै कि तमे गोटे ओवरऑल व्यू दोछ नै कि पूरा माने गुडाय जदि पॉइंट लिखिबो तमे पाखे टाइम मैनेजमेंट करिया पुनी प्रॉब्लम हिजो गोटे दिटा पॉइंट लिखिबो जदि कि हां माने पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट लिखिबो जदि नेगेटिव रो जेथरे कोन हमरो रहउची जे चैलेंजेस कोन रहउची ओके बेले बेले एथिरे हमर कोन होए ना जानि सुनि कि हमरो पॉलिटिक्स करा जाय सपोज हमर काकू जे जाईची तो एथरे हमर कैबिनेट कोन करूची ना जो तांको जुडिशियल क्षेत्र तो हे पलानी माने मर्सी पिटिशन थ्रू ताको रिलीज कर दउछन्ती ओके तो इथे तमे लिखिबो जे हमर कोन ना हमर प्रेसिडेंट कर जेमति रहिले जे हमर कोन कोन पार्डनिंग पावर रहउची जे पार्डनिंग रहउची माने कंप्लीटली फ्री कर दबो ओके आउ प्रेसिडेंट कर तमे जानि छ जे दीटा हमर जोटा कि कोर्ट मार्शल हला कि डेथ सेंटेंस हला तो एई केस रे पूरा टोटल पैटर्न करियो रिप्राइव हला हमर टेम्पररी सस्पेंशन आ जेमति देखिथिले जे तापर रेस्पेक्ट हला लेसर इन द सेम क्राउन तुमको 20 वर्ष अछि मे भी तुमको 15 वर्ष करि परिबे रेमिशन विदाउट चेंजिंग इट्स टाइप तापर हमरा कम्यूटेशन जोटा कि हमरा एक्सचेंज विथ लेसर तो इथरे वी हैव टू एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइडेड रिव्यू बट सुप्रीम कोर्ट जोटा कि हमरा हमरो जो सुधाकर केस रे थिला फंक्शन ऑफ द mercy petition and the petition तो इथे philosophy होची underline the parade of power that is every civilized country recognize and provide for the pardoning power as an act of grace and humanity in course of laws then pardoning power founded on the
consideration of the public good. तापरे होची जे exercise on grounds of public welfare, constitution and provision. that हमरा कहा जाय जे हमरा 100 जन हमरा दोषी बसे खसी जानतु जने निर्दोष दंड न पाऊ तो जते हम कहबा miscarriage of the law हुए और miscarriage of the judgment of a supreme court जदि भूल किछि हे जाइछि आज ए लास्ट रिजल्ट हिसाब रे हमरा एटारे कोन करि पारे ना मर्सी पिटिशन हमरा तार पॉजिटिव रे लिखियो जे एथिरे हमरा ओटे एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू ओटे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये देखंदिनी ओटे मोरल और एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू एटा हमरा देखा जाय द कांसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज द फर्स्ट इवॉल्व बाय हमरा सुप्रीम कोर्ट इंडिया मैटर ऑफ द रूफ हुनर versus Ashok Kunal. The laws and rule made under it. I would question ki the same. No. It's a mercy petition. President got mercy in individual and lesser punishment in India. Pardoning is an act of mercy and forgiveness of clemency. Case hala Tihar Jail administration have asked the convict of Nirbhaya case 2012 to apply the mercy petition before the president with 7 days. Tapre aude that's a good thing case. Moreover, the intent of Indian laws not executing an innocent person, but even after the errors. So thereby president is the fountain of mercy and justice. Okay. अच्छा इठी हमरा बहुत गुडे अनिवा लेक्चर आर्टिकल 72 जोटा कि जे empower the president to grant pardon to a person who are tried and convicted of any offense under the union law, court martial in case of death sentence awarded. तो एथिरे हमरा the pardoning power of the president जोटा कि is independent of judiciary but an executive power exercised by the president on advice of the union cabinet. तो एथिरे mercy petition हमरा pardoning power of the president रे commute करिवो pardon करिवो commute माने one form of punishment को lighter कर तो death sentence to तमे कोन करि परिबो life imprisonment करि परिबो तो pardon remove from the both sentence and conviction for remission हला reduction in the period of the sentence without changing its character, despite awarding a lesser sentence in place of the origin due to some special reason. Reprieve stay on the execution special in the death sentence case for a temporary period. The classification of the Supreme Court on clemency of Bachan Singh versus State of Punjab, Apex Court evolved the doctrine of arrest of a Rare crime. rarest of rare crimes. A doctrine of rarest of rare crimes while award the death sentence. Tapre Machi Singh versus some state of Punjab. Supreme Court clarify the categories of rarest of rare crime, the manner, motive and nature of the magnitude. Satyanarayan Singh versus Satyanarayan Chauhan case. The Apex Court held that the death sentence can be commuted like imprisonment on ground of delay if the convict suffer from mental insanity and cannot be hanged. मैं एटा भी लिखि परिबो जो हमरो राजीव गांधी मानन को जो हमरो राजीव गांधी कर मर्डर मान को हमर छाडी दिया गला तो सेटा भी गोटे केस तुम लिखि परिबो सेतरे ओके so thus clemency power keeps the door open if there is an opinion that the verdict is very harsh or there might be a possibility of a judicial error or judicial So Rajiv Gandhi case ta to sir special power of constitution kono article 142 na kono uta thila na kono हाँ हाँ 142 थिला सेटा तो सेटा pardoning power तो होबनी किंतु तांकर तमे देई परिबो ना तांको डेथ सेंटेंस रु आगो लाइफ इम्प्रिजमेंट को करा हितला मझिरे
तांकर आगु तांको डेथ सेंटेंस दिया हेतला तापरे लाइफ इम्प्रिजमेंट करा गला तापरे लाइफ इम्प्रिजमेंट रो एबे पूरा फ्री कर दिया सर ये जो केसेस उडा सब कोठी मिलुची जो एते एग्जांपल रे जो केस आमचंदी सेटा कोन एंती गूगल रे मारले मिलिबो जे पैडनिंग पावर रो केसेस कोन एग्जांपल एंड हां 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 मिले जो ओके मिले जो कारण तमे ए केस रे देखो तमे खाली डायरेक्टली लिखि दबो जे खाली कोन कोन हमर रहउची किंतु केस गोटे दिटा देले तमरो टिके मोर माने आंसर ता मोर एक्चुअली स्पेशल हे जाउची ओके सेमती करिके लिखि परिबो ओके सो आउ गोटे क्वेश्चन हमें करिबा क्वेश्चन नंबर 9 द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल काउंसिल एंड एडवोकेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 ओ अनिवा को Sir, the Office of the Attorney General is a constitutional body and is the highest law officer of the country. So the Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India and has the right to speak and take part in proceedings of the Houses of Parliament, including joint sitting. Sir, Attorney General as Chief Legal Advisor advises the central government on matter referred by the President. It performs legal character duty assigned to him by the President and discharges any other duty conferred to him by the Constitution or any law. Attorney General as lawyer of the Government of India appears to the Supreme Court on behalf of the Central. तुम वॉइस टा केंद्र टिके क्रैक होसी ओके टिके आउथरे जो ये कलो टिके कहीं वॉइस टा क्रैक होसी आउथरे देखे हां ठीक है हां को स्टार्ट करिवे नहीं ड्यू छाड़ी थिला टिको हम हमें कहले जे आर्टिकल 76 हमरा हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री हमें कहले तो इस उडा हमें कहले किंतु तार जो मेन हमें कौन फंक्शन again sir Attorney General as lawyer of Government of India he appears before the Supreme Court on behalf of the central government on the cases concerning Government of India represents Government of India in reference mode the President to Supreme Court under Article 143 of the Constitution. He appears in High Court where the Government of India is concerned, and Attorney General cannot advise or hold a brief against the Government of India. Attorney General cannot defend the accused in criminal cases without the prior permission of government. So, however, Attorney General is not in full-time employment with Government of India. Hence, he does not fall in list of government servants. Furthermore, he is not debarred from private practice. Hence, Attorney General is the chief legal advisor and lawyer of Government of India. ओके क्वेश्चन तो डायरेक्ट अछि ओके आउ कोन के पॉइंट एथे कहबो ओके सो लेट्स डिस्कस डायरेक्टली टाइम डिस्कस करबा ओके को Okay, so let's see एथिरे आ कोन कोन रहिबो जे अटॉर्नी जनरल ऊपर ओके कोन पॉइंट रखि परिबो जे अंडर आर्टिकल हमर 76 रे so there should be a person हमरा कोन होछि ना देयर इज अ प्रोविजन फॉर हमरा जो अटॉर्नी जनरल जो जहा को हमें कहै छै हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड डेफिनेटली अपॉइंटमेंट हवा पई कोन दरकार ही शुड बी क्वालिफाइड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माने 5 वर्ष हाई कोर्ट रे जज जैतिबो कि 10 वर्ष हमरा एडवोकेट हिसाब रे काम करथिबो एंजॉय द ऑफिस हां सो हमरा जो
एटा तब तो इंट्रोडक्शन लिखि देला कि हां आर्टिकल 76 रे कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देले ही शुड बी क्वालिफाइड टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंसी ताकर मेन फंक्शन कोन एज ए चीफ लीगल काउंसिल हिसाब रे कोन करंती आ एडवोकेट हिसाब रे कोन करंती चीफ लीगल काउंसिल हिसाब रे टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर हला तापरे परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू हिम द प्रेसिडेंट जो कामोडा देथिबे सेटा करिया पे बाध्य टू डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन assigned by the president to him advocate हिसाब रे टू प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमरो प्रेसिडेंट हमरो एडवाइस मागंती तापरे टू रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट other provision not a government servant can be continue to participate on the mane participate kari paribe can be audience in any court can be take part in the proceeding of Lok Sabha Rajya Sabha complete amara no or amara किंतु amara right to vote न थाई कि आउ सब participate करि परिबे कहि परिबे take part in the proceeding particularly ताका function ऊपर amara more focus करके लिखा okay So same also the Article 76 new Constitution of India envisages the Attorney General of India, the highest law officer of the country, is the chief legal counsel and advocate of the country. The role hela give advice and perform legal matter assigned to him by President, appears on behalf of Government of India in all cases in Supreme Court, President represents Government of India in any matter related to Supreme Court under Article 2, advise jurisdiction of the Supreme Court as 143. Discharge its function conferred on him by Constitution of India, can be part in any court proceeding in Indian territory, not considered as a government servant, can be take part the private legal practice also. He has the right to speak and take part in the proceeding of the parliamentary houses. So being the highest law officer of the India, he is responsible to protect Indian government from arbitrary cases. So it has a okay. So I think that we can now point should have so again. ठीक अछि तो हमें कौन करिबा ना क्वेश्चन नंबर ओके 10 11 12 ये तीनटा को काली कंप्लीट कर दो ओके सर मॉर्निंग क्लास सर हां को सर यूपीएससी ର प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन रे किछि आनले किछ लाभ हो